So in the last lecture, we started with analysis of real gases, and हमने start ऐसा किया. In the context of real gases, there are two assumptions which we made for ideal gas. They are not applicable. Those are volume of the gas molecules is negligible when compared to the volume of the container. This is not a valid assumption. And there are no intermolecular interactions. There will definitely be some intermolecular interactions because it is a real gas. If there is an intermolecular interaction, there will definitely be potential energy. Initially, हमने potential energy zero माना if there are no interactions, right? So if there is a positive interaction, there will be attainment of stability. If there is attainment of stability, the energy must decrease. So zero से कम होने का मतलब the potential energy will become less than zero. And positive interactions occur whenever the forces are long range forces. मतलब the atoms are at sufficiently large distance but not so large. There are some intermolecular interactions because of the distance, and वो जो distance है बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, okay? बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है, okay? So at that particular distance, there are attractive forces, and the attractive forces can be because of dipole-dipole interaction, induced dipole interactions. Whenever the molecules are coming further close to each other, the nuclei will also start to interact. Nucleus is positively charged, so positive के बीच में there will be repulsive forces. So because of the repulsive forces, again energy of the system will start to increase. So potential energy, first it will reach its minimum. From there, it will again start to increase. When only the repulsive forces become dominant, the energy of the system must increase. So the potential energy of the system must be greater than zero. So उसका ही हम ग्राफ प्लॉट किया बायोमोलिकुलर सिस्टम के लिए. बायोमोलिकुलर सिस्टम मतलब I am bringing two molecules close to each other. Whenever I am bringing two molecules close to each other, start में if they are at very large distances from each other, the intermolecular interactions will be negligible or zero. In that case, potential energy is zero. So when I am bringing them close to each other, first there is development of long range forces which are attractive in nature. So long range forces का magnitude भी बढ़ता जाएगा if I am bringing them close to each other. एक time के बाद the repulsive forces come into picture. Because of the repulsive forces, और जो attractive forces है, net attractive forces और net interaction जो है, वो थोड़ा घटता जाएगा. Net interaction even now it is attractive in nature because you are having potential energy less than zero. Because of the repulsive forces, थोड़ा energy बढ़ता जा रहा है, it is again becoming zero. And after this point, if you are trying to bring the molecules further close to each other, तब क्या होगा? There will be repulsive forces. Because of the repulsive forces, the potential energy increases. So इस particular section में the potential energy is zero or the gas is acting like ideal gas. In these two sections, the potential energy is not equal to zero. In this case, it is less than zero. In this section में it is greater than zero. If it is less than zero, attractive forces are dominant. If it is greater than zero, repulsive forces are dominant. With respect to pressure, if I want to mark pressure in these three regions, pressure बहुत कम है तो molecules बहुत कम रहेंगे, molecules बहुत कम रहा तो उनके बीच में distances ज़्यादा हो सकता है. Distance ज़्यादा है तो there won't be any interactions. So इस particular region में the pressure is very low. Now you need to have some distance between the molecules which is not so large. Okay, so उसके लिए we will be taking low to moderate number of molecules which will be creating low to moderate pressure. As a result, you will be having positive interaction. अगर molecules के space बीच में space बहुत ही कम होना है तो you need to have very large number of molecules. So if you are taking very large number of molecules, the collisions will be very high, or else I can say the pressure is very high. Clear है? Okay. Further, ये जो real gas है,
It is also studied with the help of a factor called compressibility factor. इसका मतलब क्या है? Let us try to understand. Compressibility factor, it is denoted by symbol Z. And this is equal to volume of the real gas. Molar volume ले रहा हूँ. Molar volume indicates volume of 1 mole or the volume occupied per mole divided by the volume occupied by ideal gas at same conditions. Volume of the real gas divided by volume of the ideal gas. इसका मतलब क्या है? Everyone concentrate. सभी लोग लेक्चर में हैं? Yes, sir. Sir. Okay, good. Suppose I am enclosing some gas inside this particular piston. अभी मैं क्या करने वाला हूँ? I will be compressing the gas. Okay? In order to compress the gas, I need to push this piston. Suppose मान लेते हैं initially वो जो piston है यहाँ तक compress किया. Okay? यहाँ तक compress करके I left the piston. And let us assume this volume of the container is very large and the number of molecules which I'm taking inside the container are very less. So in this particular situation, what is the pressure inside the container? Is it very low? Can I say the pressure is very low? If the pressure is very low, can I say, or जो gas है, it will behave like an ideal gas? So इस केस में क्या होता है? As there are no interactions among the molecules, मैं जितना compress करता हूँ वो piston को उतना ही compress होगा. There won't be any change. इसका मतलब क्या है? आप नेक्स्ट डायग्राम के बाद समझ में आएगा. Wait for 2 minutes. Don't worry. Initially piston यहाँ पे है. मान लेते हैं मैं पिस्टन को यहाँ तक कंप्रेस कर रहा हूँ. ओके. यहाँ तक कंप्रेस करने की वजह से उस पिस्टन के अंदर लो टू मॉडरेट प्रेशर क्रिएट हुआ. इन लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन्स the gas will behave like a real gas. And what are the nature of the forces? The net forces will be attractive. Yes. So molecules के बीच में if there are attractive forces, the molecules will further come close to each other. मैं क्या किया? पिस्टन को यहाँ तक कंप्रेस करके छोड़ दिया. ओके, मान लेते हो पिस्टन है, it is weightless and frictionless. Because of the attractive forces that got generated in this particular pressure region, the molecules will come further close to each other. मतलब वो जो पिस्टन वहां पे रहना चाहिए था ideally, but हो क्या रहे? It is coming to this particular region. Had it been an ideal gas, everyone concentrate. Had it been an ideal gas, there won't be any interactions. So piston में जितना कंप्रेस करता हूँ उतना ही कंप्रेस होगा, फर्दर अंदर नहीं जाएगा. So this has to be the volume of the ideal gas. Okay, but as it is not the ideal gas in this situation, as there are interactions and there are positive interactions that got developed inside the gas, और जो volume है, the volume got decreased. So this particular volume is nothing but the volume of the real gas. समझ में आ रहा है आपको?
So इस particular context में if I try to calculate the value of Z, what is Z? Z is volume of the real gas upon volume of the ideal gas. Volume of the real gas in this case, it is less than volume of the ideal gas. So what will be the value of Z? It will be less than 1. Samjha? Yes, sir. So the compressibility factor for the real gas, in low to moderate pressure regions, it will be less than 1. Okay. अभी इस केस में, स्टार्टिंग केस में, as there are no interactions, मैंने पिस्टन को पुश किया, पुश करने के बाद भी क्या हुआ? The pressure region is very low. Because of the pressure being very low, there are no interactions. As a result, जितना मैं compress करता हूँ उतना वहीं पे था पिस्टन. So इस केस में the real gas is behaving like an ideal gas. Okay? जो भी गैस अंदर है, that is the volume of the ideal gas, which is equal to the volume of the real gas. That real gas is behaving like an ideal gas here. Okay. So Z क्या हो जाएगा? Equal to 1. Equal to 1. Last case में we need to create high pressure. High pressure के लिए क्या करना पड़ेगा? Push the piston further into the container. यहाँ तक पिस्टन को पुश करके मैंने छोड़ दिया. अगर आइडियल गैस है तो क्या होना चाहिए? और पिस्टन यहीं पे रुक जाना चाहिए because of no interactions. Hence this has to be the volume of the ideal gas. But very high pressure के केस में what are the forces? Repulsive. Very high pressure. So it is leading to repulsive forces. So repulsive forces की वजह से होगा क्या? ऊपर जाएगा पिस्टन. The piston will be pushed upwards. Okay. So this is the volume of the real gas. So in this case, I can say volume of real gas is greater than volume of ideal gas, or Z will be greater than 1. Okay. So if any real gas, if it is behaving like an ideal gas, its Z will be equal to 1. If the attractive forces are dominant, its Z will be less than 1. If the repulsive forces are dominant, Z will be greater than 1. So इस पर्टिकुलर डायग्राम में फर्दर आप लोग और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर पार्ट में Z is equal to 1. इस सेक्शन में Z is less than 1. In this section, Z is greater than 1. समझा? बस ये पेज में पूरा रियल केसेस के बारे में है सब कुछ. इस डायग्राम में सब कुछ है. Any gas can act like an ideal gas. Any real gas can behave like an ideal gas if it is present at very low pressure. इसके साथ temperature condition भी बात करेंगे. What is the temperature? High temperature या low temperature? High temperature. High temperature. High temperature. Okay. Okay. I hope this is clear to everyone. Clear? So you can study a real gas with the help of compressibility factor.
What is meant by compressibility factor? It is the volume occupied by the real gas divided by the volume. अगर वो ideal gas है तो कितना occupy करेगा? Okay. So initially I have taken some gas and the volume is very huge. So the distance among the molecules also very large. So there are no interactions inside this particular container. अभी इस particular piston को मैंने क्या किया? थोड़ा ही push किया and I am maintaining the pressure very low. So if the pressure is very low, even now the gas is acting like an ideal gas. If it is an ideal gas, there won't be any interactions. So ये जो piston मैं जितना push करता हूँ उतना ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा. So इस case में this is the volume of the ideal gas. After compression also the volume is remaining same. So this is also the volume of the real gas. So volume of the real gas upon volume of the ideal gas is equals to 1. Next case में उस piston को if I am pushing to a level such that I am maintaining low to moderate pressure. If there is low to moderate pressure, there will be generation of attractive forces which are long range forces. Because of attractive forces, वो जो piston यहाँ तक push कर रहा हूँ तो यहाँ पे रहना चाहिए था, but attractive forces के वजह से molecules further pass में आ रहे and the volume of the piston or the volume of the container got decreased. So this is the volume of the real gas. अगर वो ideal gas होता तो there won't be any interaction, so volume इतना ही रहता था. So this is the volume of the ideal gas. So इस case में volume of the real upon volume of the ideal gas is less than 1. Next last case में I am pushing the piston furthermore, which is leading to very high pressure region. Because of very high pressures, there will be repulsive forces और repulsive forces are dominant. So repulsive forces की वजह से मैं जितना piston push करता हूँ उतना नहीं रहेगा, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा. Because repulsive forces की वजह से piston ऊपर push किया जाएगा. So इस केस में volume of the real gas is greater than the volume of the ideal gas. और compressibility factor will be Z greater than 1. So इस particular graph में आप लोग compressibility factor को भी mark करना है. Z is equals to 1, less than 1 and greater than 1. ये याद हो जाएगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आपको ये याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का डेफिनेशन, इट इज रियल गैस अपॉन आइडियल गैस बट नॉट आइडियल अपॉन रियल. एक जो आइडियल गैस है इट इज इन्फिनिटली कंप्रेसिबल. आप जितना भी कंप्रेस करो कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड देयर आर नो इंटरेक्शंस. सो अगर कोई भी गैस हम आइडियल गैस जैसे मान रहे तो दैट पर्टिकुलर गैस इज इन्फिनिटली कंप्रेसिबल. एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूजुअली होता क्या है, इफ यू आर टेकिंग एनी गैस एंड इफ यू आर कंप्रेसिंग इट, you are bringing the molecules close to each other, right? Whenever you are bringing the molecules close to each other, एक time के बाद because of the interactions among the molecules, the gas can be liquefied. क्योंकि molecules को पास में लेके आ रहे हैं, मतलब liquid in a way liquid state में convert कर रहे हैं. Liquid state में molecules क्या रहता है, they are not very far to each other and they are not very close to each other, intermediate रहता है ना. So जब भी आप लोग if you are bringing the gas molecules close to each other by applying pressure, what will happen? There will be conversion of gas into liquid, provided there is generation of attractive forces. And there will definitely be development of attractive forces ना, क्योंकि long range forces develop होता है. But ideal gas में होता क्या है? What is the assumption for ideal gas? There won't be any interactions no matter what. Yes, sir. So ideal gas can never be liquefied. ये एक point बोलते हैं, मतलब theoretical question में आएगा. An ideal gas is infinitely compressible and it can never be liquefied. Is that point clear? But ऐसा ideal gas जैसा रहता ही नहीं. Okay? Clear? ठीक है. Yes, sir. Okay. Let us see the definition for compressibility and compressibility factor. अभी में हमने जो बताया उसी को words में लिखा. A real gas can be studied
through its compressibility. Compressibility is the ability of a gas to get compressed on application of external pressure. Its compressibility can be compared to that of an ideal gas which has constant compressibility under all conditions. जितना मैं compress करता हूँ उतना ही compress होगा, कुछ vary नहीं होगा. Its compressibility is constant. An ideal gas can be infinitely compressed but cannot be liquefied. ये theoretical question में आता है आपको. Why is it not liquefied? Because there are no attractive forces or there are no interactions among the molecules. Hence, it can never be liquefied. So, हम 3 conditions mark कर सकते हैं. क्या क्या है compressibility के लिए? At very low pressure. At very low pressure, I can mark there are no interactions. If there are no interactions, molar volume of Vm indicates molar volume. Real gas equal to molar volume of ideal gas, and Z will be equal to 1. If Z equals to 1, real gas behave like ideal gas. Next condition. Low to moderate pressure region. In this case, attractive forces are dominant. And on application of external pressure, gas molecules will come closer than expected. Will come closer than that expected from an ideal gas. Is this statement clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. So इस case में, because of that Vm real, it will be less than Vm ideal. This implies Z is less than 1. Finally, very high pressure. Repulsive forces will dominate and on application of external pressure, gas molecules
do not come as close as that expected from ideal gas. So इस केस में V real क्या होगा? Greater. Vm real is greater than Vm ideal, implies Z is greater than 1. I hope ये clear है सबको. What is ideal gas equation? PV is equal to PV is equal to nRT. PV equals to nRT. How did we define Z? Z equals to Vm real upon Vm ideal. Vm ideal. Vm ideal. दोनों केसेस में, इस केस में देखो, अगर वो आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, द प्रेशर आई एम अप्लाइंग ऑन बोथ द गैसेस इज सेम, राइट? मतलब पिस्टन को उतना ही कंप्रेस कर रहा हूं ना बाय अप्लाइंग प्रेशर. इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन बोथ द गैसेस इज सेम, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग this equation by that P, okay, where P is pressure. So I can write this equation as P into Vm TL upon P into Vm ideal. What is PV ideal equal to? nRT. So PV upon nRT equals to Z लिख सकता हूं. मतलब ये रियल गैस के लिए हो गया. ये जो ब्रैकेट में रियल अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो रियल गैस के लिए ही. सो दिस इंप्लाइज PV क्या हुआ? Z टाइम्स nRT. सो ये जो PV is equals to Z टाइम्स nRT, ये जो इक्वेशन है, दिस इज द रियल गैस इक्वेशन where Z is the compressibility factor. PV equal to nRT is ideal gas equation. PV equals to Z times nRT is real gas equation. Is this clear? Sir, Yeah. that is molar volume, na? हाँ, यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में सब लिख लिया था. अभी ये जो है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने के लिए, मोलर वॉल्यूम हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर RT हो जाएगा. ओके, सो P इंटू V रियल इज इक्वल्स टू ZRT. मोलर वॉल्यूम क्या होता है? V मोलर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोल्स. ओके, अभी यहाँ पे जो V है, इट इज नॉट मोलर वॉल्यूम, इट इज नॉर्मल वॉल्यूम. आई एम राइटिंग दैट मोलर वॉल्यूम एज V अपॉन N, सो फिर से N इस साइड जाएगा. क्लियर? इफ इट इज फॉर 1 मोल, यू कैन राइट दिस एज PVM इज इक्वल्स टू ZRT. वो भी लिख सकते हो. और P into Vm molar volume is equals to ZRT. Your wish. If you want to write that for n moles, you can write that as Z times nRT. If you want to write that in terms of 1 mole, you can write that as ZRT. समझा? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay.
एक क्वेश्चन करें. At 273.15 Kelvin, that formula application है. Please mark the question and get me the answer. At 273.15 Kelvin and under a pressure of 10.1325 megapascals. The Z for O2. Z is compressibility factor. For O2 is 0.927. Calculate the mass of O2 necessary. Calculate the mass of O2 necessary to fill a gas cylinder of 100 dm cube. इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को कुछ कंफ्यूजन आया तो यूनिट्स की वजह से ही आएगा. Of 100 dm cube capacity under these conditions. If you are given Z, you need to use PV equals to Z times nRT, but not PV equal to nRT. Solve the question and get me the answer. रियल गैस के कंटेक्स्ट में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है. PV is equals to Z times nRT. Z एक एक्स्ट्रा आया है बस. एंड इस पर्टिकुलर PV equals to Z nRT के ऊपर इन जनरल मेंस में या नीट में क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है. ये जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला बस. एंड वो क्वेश्चन तो कभी नहीं आया अब तक, सो डोंट वरी, because this only tests your calculation skill. फॉर्मूला अगर पता है तो PV equal to Z nRT आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. What is 1 dm cube equal to? 1 liter. 1 liter. Okay. You need to convert the pressure into atmospheres, then only you can use R as 0.0821 and convert the volume into liters. What is the pressure value equal to? 1/10 atmosphere. 1/10 atmospheres नहीं है.
It is megapascals. 100 atmosphere. Pressure is 100 atmospheres. 16 kg. 16 kg. 15.4 है चलेगा. 16 kg. Pressure is 10.1325 megapascals है. So I can write this as 10.1325 into 10 power 6 pascals. 1.01325 into 10 power 5 pascals. It is 1 atmosphere. So I can write this as 1.01325 into 10 power 7 na? Or I can write this as 1.01325 into 10 power 5 into 10 power 2 pascals. ये जो पार्ट है ये क्या हुआ? This is 1 atm. So 1 atm into 10 power 2, it will be 100 atm. So the pressure is 100 atm. 1 dm cube is equals to 1 liter. They're asking about mass na. PV is equals to Z times N into R into T. The pressure is 100 atmospheres into volume is 100 liters equals to 0.927 into weight divided by molecular weight. Molecular weight कितना है? 32, right? Gram per mole into R is 0.0821. Temperature is कितना है temperature? 273.15. 273 मार्क कर लेते हैं. Okay, you will get the answer in terms of grams because यहाँ पे molecular weight है, आप लोग ग्राम पर मोल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, so ग्राम बचेगा यहाँ पे. So you will get the weight in terms of grams. So grams में जो आता है उसको kgs में कन्वर्ट करना है आपको. grams में कितना आता है? अगर कैलकुलेट किया तो आपको ये ऑलमोस्ट 15,400 ग्राम्स आएगा. Which is equal to 15.4 kg. आप लोग ये बाद में कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करना. इस क्वेश्चन में यूनिट्स कन्वर्शन से होगा. इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग आर एज आर का यूनिट जो है 0.0821. एवरीवन कॉन्सेंट्रेट. बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे यूनिट्स कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है. एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन. न्यूमरेटर में देखो एटमॉस्फेयर और लीटर आ रहे हैं ना. सो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे then you will put the value of R as 0.0821. If you are putting the pressure in terms of pascals and if you are putting the volume in terms of meter cube, then you can put the value of R as 8.314. I hope this is clear. Yes, sir. Next, आप लोग को molecular distributions के ग्राफ में we have seen two types. Molecular distribution of the same gas at different temperatures and molecular distribution of different gases at the same temperature. याद है आपको? Same gas at different temperatures पे, if the temperature is increasing, what will happen? The graph will be moving in the forward direction and the peak will be lowered. So the total number of molecules having the most probable speed got decreased, but the most probable speed is increased. Okay. Value of the most probable speed got increased, but the total number of molecules having the most probable speed got decreased. है ना? ये वाला ग्राफ. Value बढ़ा है, but number of molecules घटा है. Similarly, we have also seen the graph for
different molecules or different gases at the same temperature. So the one which is having the lesser mass will be having the highest most probable speed. क्योंकि speed is inversely proportional to root mass. अभी भी हमको वैसा ही 2 ग्राफ्स ड्रॉ करना है. We need to draw the graph for compressibility. So आपको क्वेश्चन आया तो रियल गैस से it will be given with respect to graph. Graph is important. We need to see the variation of compressibility factor with pressure for different gases. If you are taking different gases, you will be maintaining the temperature constant. Is this clear? Yes, sir. So अभी हमको क्या देखना है? Variation of Z with P pressure से कैसे vary होगा for different gases at a given temperature. मैं आपको ग्राफ देता हूं. Try to explain the graph. On the y-axis we have Z. On the x-axis we have pressure. ये जो लाइन है, this is Z equals to 1. Z equals to 1 मतलब it will be ideal gas. If the pressure is very low, all the gases will behave like an ideal gas. सभी लोग देखो. Everyone. ये ग्राफ हुआ. This particular graph is for CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. पहले मैं ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया वो ऑब्जर्व करते हैं. Initially the pressure is very low. If the pressure is very low, Z is equals to 1. As you go from left to right on this axis, what is happening to the pressure? The pressure is getting increased. So पहले क्या हुआ? Low to moderate pressure region develop हुआ. ये यहाँ से यहाँ तक का it is low to moderate pressure region. So there are attractive forces. इस particular point पे Z is the least. Z is less than 1 if there are attractive forces. And ये जो particular point है यहाँ पे, this is the minima. Okay, so इस particular point पे the attractive forces are maximum. बाद में क्या हो रहा है? Because of the repulsive forces, the attractive forces are getting decreased. Net में attractive forces ही है, but repulsive forces की वजह से the net attractive forces are getting decreased. So decrease होता जा रहा है. एक time पे attractive forces are equal to repulsive forces. So Z is again equal to 1. उसके बाद repulsive forces are dominant, इसलिए Z is greater than 1. समझा ये वाला ग्राफ? Everyone. Yes, sir. एक बार फिर से देखते हैं. पहले क्या हुआ? Because of the attractive forces, Z is decreasing. Okay. It is again increased because of the repulsive forces. ऐसा क्यों आ रहा है? एक मिनट.
Initially, the value of Z got decreased because of the attractive forces. It achieved a minimum value. उसके बाद repulsive forces are also coming into picture. As a result, और जो Z का value है फिर से बढ़ता जा रहा है. अभी भी ये नेगेटिव ही है. इसका मतलब attractive forces are dominant. एक टाइम के बाद the repulsive forces are dominant, hence Z is greater than 1. This is for CO2. वैसा मैं different graphs plot करता हूँ different gases के लिए. Everyone observe. ठीक है. This graph is for hydrogen. This graph is for helium. This is for nitrogen. This is for oxygen. This is for methane, CH4. And this graph is for CO2. By looking at the graph, what can you comment? By looking at these graphs, what can you comment? What are the observations? H2 and He shows positive deviation. H2 and He shows positive deviation. इनके लिए Z हमेशा greater than 1 है. Okay. और उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए ग्रेटर देन 1 ही रहेगा. स्टेबिलिटी से क्या लेना देना? We are not talking about any reactions. We are talking about only interactions, and these interactions are among the molecules only. मतलब हाइड्रोजन के बीच में ही इंटरेक्शंस देख रहा हूँ, हीलियम के बीच में ही देख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, CO2. और जो मॉलिक्यूल्स अपने खुद के मॉलिक्यूल्स रहता है ना, उनके खुद में ही इंटरेक्शंस के बारे में मैं देख रहा हूँ. हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी स्टेबल है क्या? नाइट्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से तो स्टेबल नहीं है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक गैस, इसलिए उसका परसेंटेज जो होता है इट इज 71% इन अर्थ एटमॉस्फेयर. इट इज द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक गैस. एक बार इस ग्राफ के ऊपर सोचो, 2 मिनट, आ रहा हूं.
Yeah. Any views? Anyone? Sir, there won't Sir, be any low attractive forces in hydrogen. हाँ, किसी ने कोई one at a time. प्राचीन बोलो. low pressure सर, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं रहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम में. हाँ, इससे ये कंक्लूजन मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ. In case of hydrogen and helium, there are no attractive forces, or there is never generation of attractive forces. As a result, Z is always greater than 1. इससे एक तो क्लियर है. ठीक है. या शिव प्रसाद, तुम कुछ बोल रहे. सर लो प्रेशर में वो गैसेस नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं. लो टू मॉडरेट प्रेशर में बाकी गैसेस सारे नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं. नेगेटिव डिविएशन इंडिकेट्स Z is less than 1. Okay, positive deviation indicates Z is greater than 1. In low to moderate pressure regions, the gases other than hydrogen and helium, they are showing that negative deviation, which is as expected according to the theory. अभी हमने जो theory पढ़ा. But hydrogen और helium कभी भी वो negative deviation भी show नहीं कर पा रहे. The reason for this is hydrogen and helium are very small. Hydrogen is very small atom, right? So hydrogen molecule भी छोटा है, helium molecule, helium तो एक ही atom है, monoatomic है. Helium molecule is also very small. Because of their smaller sizes, their surface area will also be small. Hydrogen or helium के case में, what are the kind of interactions we can have? They are induced dipole interactions. है कि नहीं? अभी ये जो induced dipole interactions किसके ऊपर डिपेंड होता है? One, it depends on surface area. Two, it depends on molecular weight. Okay. More is the molecular weight, more will be the van der Waals forces. More is the surface area, more will be the van der Waals forces. अभी हाइड्रोजन और हीलियम के केस में their molecular weight is also less. हीलियम का molecular weight 4 है, हाइड्रोजन का molecular weight तो 2 ही है. Their molecular weight is also less, as well as their sizes are also very less. Because of that, उनके बीच में जो induced dipole interactions develop होगा, they will be very less. Okay, because of those less repulsive forces, because of those less attractive forces, कभी भी उनके बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं बन पा रहे. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम उनका मास कम है तो उनका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा. स्टार्ट में हमने कुछ पॉइंट पढ़ा. In order to develop an interaction, the molecule must spend sufficient time in the vicinity of other molecule. Okay, दो molecules के बीच में एक sufficient time होना चाहिए, तभी वो जो attractive force है वो generate हो सकता है. हाइड्रोजन और हीलियम इतने छोटे होने की वजह से और इनका मास भी इतने कम होने की वजह से their molecular speeds are very very large. Okay, उनके speeds जो है बहुत ज्यादा होता है. Because of their huge speeds and because of very less interaction among them, कभी भी एक positive interaction develop ही नहीं होता low to moderate region में. Okay, उस particular reason के वजह से इनका Z हमेशा greater than 1 नहीं आता है. बहुत पास में आ जाने के बाद क्या होगा? Repulsive forces develop हो जाएगा. जब low to moderate pressure region में है, even though they are coming close to each other, attractive forces are unable to develop because of their very high speeds and less induced dipole interaction or less London dispersion forces. समझ में आया? Everyone? Yes, sir. Okay. Can we have liquid hydrogen? Is that possible? No, sir. Liquid hydrogen No, कभी? sir. Not possible. We cannot form liquid hydrogen. क्या?
Possible, sir. It is possible. Liquid hydrogen is possible if I'm making hydrogen as liquid. इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो रहा होगा. Everyone please concentrate. अगर लिक्विड हाइड्रोजन पॉसिबल है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बनना चाहिए, तभी तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना. बट इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने z ग्रेटर देन 1 प्लॉट किया हाइड्रोजन के लिए. इफ z इज ग्रेटर देन 1 कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हम नहीं बना रहे. बट वी ऑल्सो नो दैट लिक्विड हाइड्रोजन इज पॉसिबल. सो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ गलत है क्या? फिर एक ग्राफ गलत है क्या, या वो थ्योरी लिक्विड हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होगा क्या? ग्राफ गलत है. ग्राफ गलत नहीं है, ग्राफ भी सही है. लिक्विड हाइड्रोजन भी पॉसिबल होता है. ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, दिस इज ड्रॉन एट सम टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर के ऊपर वेलोसिटी का क्या फर्क आता है? मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द वेलोसिटी. If I want to create attractive forces, reasonable attractive forces among hydrogen molecules, उसका speed मुझे बहुत ही ज्यादा कम करना पड़ेगा. Okay? If I am decreasing its speed by very high amount, then there is a chance for the development of attractive forces. So speed कम करने के लिए you need to decrease the temperature. So if you want to form liquid hydrogen, you need to compress that particular hydrogen gas at very, very low temperature. Okay, the temperature is 33 Kelvin. 33 Kelvin से भी नीचे temperature रख के उसको compress किया तो 33 Kelvin. 33 Kelvin से नीचे temperature maintain करके उसको compress किया तो then you can get hydrogen gas. Sorry, hydrogen liquid. 33 Kelvin मतलब temperature क्या हो गया? I think it is minus 240 Celsius. Minus 240. हाँ, minus 240 degrees. minus 240 degrees temperature पे उसको compress किया तो तब जाके हमको hydrogen gas मिलता है. समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? Because hydrogen molecules के बीच में attractive forces बहुत कम होता है, और magnitude of attractive forces. That is because of its very small size and less molecular weight. So उस magnitude से हमको molecules को पास में जब आते हैं, उनके बीच में attractive forces develop होना है तो you need to have very less speeds. That can be achieved at very low temperatures. ठीक है, इसके बारे में आगे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. बाद नेक्स्ट गैसेस के ऊपर जाते हैं. N2O2 CH4 and CO2. N2O2 CH4 and CO2. Tell me the molecular weights. 28, 42. N2 is 28. O2 is 32. CH4 is 32, 17, 16, CO2 is 44. 44. So basically ये जो London dispersion forces और Van der Waals forces, they depends on Van der Waals forces. किन किन के ऊपर डिपेंड होता है? Surface volume. Surface area, size, which is nothing but size, as well as mass. Okay, you need to see both of these factors. More is the surface area, more will be the induced charges, more will be the attractive forces. More is the mass, then also you will be having more attractive forces. अभी CO2 देखो. CO2 has highest mass, which is 44 AMU, and CO2 also has highest surface area. Highest surface area क्यों बोल रहा हूँ? Because CO2 is a linear molecule. Yes, sir. Okay, because of its linear geometry and linear shape, देखो इसका surface area बहुत ज्यादा होता है.
उसके बाद CH4 को है, देखो CO2 में हाईएस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से उसका Z मच लेस देन 1 है. After that we have placed CH4. In CH4, even though its molecular weight is lesser than that of O2, it will be having greater surface area. Yeah, it will have greater surface area because of the greater number of atoms. उसके अंदर 5 atoms है. O2 के अंदर you are having only 2 atoms. Okay. So because of the greater surface area in CH4, the attractive forces are more. As a result, CO2 के बाद इसके लिए Z less than 1 है. Then you have O2. अभी N2 और O2 में surface area comparison almost same ही रहेगा. You are comparing them with the help of molecular masses. O2 has greater molecular mass when compared to N2. इसलिए O2 के लिए Z it is much less than 1 when compared to N2. Clear? So question में आपको they will be giving you the graphs. They will ask which particular graph can be associated to which particular gas. इस केस में मैंने आपको CO2, CH4, O2, N2 दिया है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल से ही देते हैं. सपोज इसी पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर मुझे NH3 को दिखाना है. If I want to mark the graph of NH3, वो कहाँ लाई करेगा? इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इसके नीचे, कहाँ पे रहेगा? CH4 और CO2 के बीच में. CH4 और CO2 के बीच में. ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? NH3 का मास कितना है? CH4 and O2 sir. 17. CH4 and O2 sir. CH4 and O2 के बीच में रहेगा. बाकी लोग को क्या लग रहा है? Anyone? This will be the graph. This will be the graph for NH3. CO2 से भी कम रहेगा, CO2 से भी नीचे रहेगा. What is the reason for that? The reason is hydrogen bonding. In NH3, you have hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the strongest form of van der Waals forces. So hydrogen bonding बहुत strong होने की वजह से उसके बीच में interactions और भी ज़्यादा होता है NH3 में when compared to CO2. In CO2 you have only induced dipole interactions, but NH3 जो है, in that you have dipole interaction. It is the strongest form of dipole interaction, hydrogen bonding. So वो उससे भी नीचे रहेगा NH3. Okay? समझ में आया? आप और एक क्वेश्चन भी आता है, टेट कर ले. Which of the following gases is deviated maximum from the ideal gas behavior? Deviated maximum from the ideal gas behavior का मतलब क्या है? उसका Z it will be much less than 1. Z जितना कम रहेगा उतना ही deviation है ideal gas behavior से, because ideal gas के लिए Z equal to 1 है. So less than 1, जितना कम रहता है 1 से उतना ज्यादा deviation ideal gas behavior से. बोल सकता हूँ? So among all these gases, which is deviated most from the ideal gas behavior? NH3. NH3. Clear? Among all these gases, tell me the order of ease of liquefaction. Order of ease of liquefaction, which can be liquefied most easily. NH3 जिसमें attractive forces बहुत ज्यादा होता है, that particular thing can be liquefied most easily. Followed by उसके बाद
CO2. CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद O2, उसके बाद N2. N2. ओके, हीलियम और हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप कभी कर नहीं सकते हो लिक्विफाई. If you want to liquefy these things, you need to plot this particular graph at some other temperature. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे these things can have, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, नीचे जा सकता है ग्राफ. ओके, usually these graphs are drawn at room temperature. रूम टेम्परेचर तो कभी हाइड्रोजन हीलियम का नीचे आ ही नहीं सकता Z. उसका टेम्परेचर कितना कहा मैंने, 33 केल्विन से नीचे रहा तो तब जाके अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेगा. I hope this is clear. Graph is very important. Understanding of graph is very important. इसमें हम plot क्या किया? We have marked the variation of Z with respect to pressure for different gases. If the attractive forces are more, Z उतना ही ज़्यादा कम रहेगा. As you go from left to right, the pressure is increasing. So initially low to moderate pressure region will be created. In that region, Z will be less than 1. If the attractive forces are very more in that particular gas, Z can be much less than 1. That is determined by its molecular weight and surface area and Van der Waals forces interaction. Van der Waals forces में आप dipole-dipole interaction पढ़ा. Hydrogen bonding is the strongest form of dipole-dipole interaction. Hence NH3 is placed at the bottom. CO2 में molecular weight ज़्यादा है, उसका surface area भी ज़्यादा है because of its linear geometry. Hence वो NH3 के ऊपर है थोड़ा. CH4 में even though the molecular weight is less, the surface area is more because of the more number of atoms. 5 atoms है, इसलिए इसका compressibility factor O2 से भी कम है. Okay, एक particular pressure के बाद Z is becoming greater than 1. So in gases के लिए NH3 के लिए this particular region is considered as high pressure. N2 के लिए यहाँ से ही start हो रहा है high pressure region because यहाँ पे इसका Z greater than 1 है. And for hydrogen and helium, at this temperature Z is always greater than 1. The reason for this is because of their low molecular weights and high speeds. High speed के वजह से कभी sufficient time spend नहीं कर पाएंगे, attractive force develop नहीं होगा. Low molecular weight and low surface area की वजह से और जो magnitude of dipole-dipole interactions है वो बहुत कम है. I hope this is clear. As these graphs, all of them, as they are drawn at constant temperatures, at a given temperature, they're called as isotherms. Okay. कुछ points लिख रहा हूँ यहाँ पे. Stronger is the intermolecular forces of attraction. Lower is the minima. For a gas. जितना ज्यादा attractive forces रहेगा, ये जो point है उतना ही नीचे रहेगा. Next point. For H2 and helium, intermolecular forces of attraction is very small. Due to their
small size. Okay. Next. Variation of Z versus P for a given gas at different temperatures. Variation of Z versus P for a given gas. अभी गैस को सेम है different temperatures पे. Initially क्या किया हमने? For different gases and the temperature is same. Okay. इसके लिए ग्राफ कैसे होगा? What is the effect on attractive forces on increasing temperature? What is the effect on attractive forces on increasing temperature? Anyone? What happens to attractive forces on less attractive forces because of the high velocities? So temperature, if it is very less, if the temperature is very less, then Z can be much less than 1, or you will be having minima. Okay. अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, सो जो मिनिमा का पॉइंट है वो भी चेंज होगा. देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ का ऑब्जर्व करो. दिस इज द टेम्परेचर 223 केल्विन. दिस इज द टेम्परेचर 273 केल्विन. दिस इज एट 323 केल्विन. दिस इज एट 373 केल्विन. You can clearly observe if I am increasing the temperature और जो Z का मिनिमा पॉइंट जो है वो बढ़ता जा रहा है. मतलब यहाँ पे Z is much less than 1 because of greater attractive forces, and that is because of lower velocities. वेलोसिटी कम होने की वजह से attractive forces का मैग्नीट्यूड बहुत अच्छे से बन सकता है. यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, इसके the Z is even now it is less than 1, but इसके कंपैरिजन में it is not so less. यहाँ पे देखो initially Z is almost equal to 1, उसके बाद Z is becoming greater than 1. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे Z equal to 1 है. So इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक Z is equals to 1. उसके बाद is becoming greater than 1. If the temperature is greater than 370, or if the temperature is 373, in this case Z is always greater than 1. So from this graph, I can conclude if I want to liquefy the gas will be easily liquefied at 223 Kelvin. थोड़ा मेहनत लगेगा at 273 Kelvin. I can never liquefy the gas at 373 Kelvin. 373 पे ही रखते if you are decreasing the pressure, sorry if you are increasing the pressure, मतलब molecules को पास में लेके आ रहे, कभी भी वो liquefy नहीं होगा. ending में repulsive forces से ज्यादा होता है. Okay, attractive forces are never generated at that particular temperature.
एंड ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर नाइट्रोजन गैस. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. What is the equation for real gas? PV is equals to Z times nRT. एंड इस ग्राफ के लिए इस पर्टिकुलर रीजन में Z is equals to 1. And उस पर्टिकुलर ग्राफ में the temperature is also constant. If Z equals to 1 and temperature is equals to constant, PV क्या हो गया? Z भी एक कांस्टेंट है, N भी एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट है. PV equals to constant हो जाएगा. constant. If PV is equals to constant, what is that law called? Boyle's law. Boyle's law. Boyle's law. Okay. So ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, where Z equals to 1 for some pressure range, Z equals to 1 in some pressure range, that particular temperature is called as Boyle's temperature. Boyle's temperature करके क्यों बोल रहा हूँ? Because of that constant temperature, PV is equals to constant, or the gas is behaving like an ideal gas. The temperature is mentioned as Boyle's temperature. Okay, what is Boyle's temperature? At that particular temperature, the real gas will behave like an ideal gas for some pressure range. Okay, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर रेंज में Z equal to 1 है. इसके बाद Z greater than 1 होता है. समझा? Okay, पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ. If you have any doubt, please ask me. Lower is the temperature, lower will be the kinetic energy of gas. And it will be easier to liquefy gas or compress it. Next point. There exists a characteristic temperature. There exists a characteristic temperature for every gas for which it almost behaves ideally for a small range of pressures. For a small range of pressures. And that particular temperature is called as Boyle's temperature. okay. I hope these two graphs are clear and the explanation is also clear. Any doubt?
So what is the real gas equation? What is the real gas equation? PV is equal to PV equals to Zn RT. PV equals to Z and RT. What is the value of Z in different pressure regions? For very low pressure, Z is equals to 1. For low to moderate, Z less than 1. For very high pressure, Z is greater than 1. Clear? Okay, we will continue in the next lecture. Thank you.